intensity in interference. Here suppose two light waves having the displacements y1, y2, amplitudes are a1, a2, and the constant phase difference between the two waves is phi. Then the displacement y1 is equal to a1 sin omega t of the first wave, and second wave y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. The resultant displacement at any instant y is equal to y1 plus y2. Here y1 it is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. This is equal to a1 sin omega t, a2 sin x plus y sin x cos y plus cos x sin y. This is equal to a1 sin omega t plus sin x plus y फॉर्मूला होता है sin x cos y plus cos x sin y. So a2 sin omega t cos phi plus a2 cos phi sin omega t. Here sin x cos y plus cos x cos ओमेगा t होगा, ध्यान रखना ये cos ओमेगा t हो जाएगा cos ओमेगा t sin phi. तो ये हमारे पास एक phi हो जाएगा और ये cos ओमेगा t a2 sin phi एंड cos ओमेगा t क्लियर करना, क्योंकि sin x plus y होता है sin x cos y plus cos x sin y, sin x cos y plus cos x cos ओमेगा t sin phi. इन दोनों के बीच a1 में sin ओमेगा t कॉमन है, a1 plus a2 cos phi sin ओमेगा t plus a2 cos ओमेगा cos phi cos ओमेगा t. लिखेंगे पुट a1 plus a2 cos phi it is equal to a cos theta and a2 cos phi it is a sin theta. ध्यान रखना, put a1 plus a2 cos phi it is a cos theta and a2 cos phi it is a sin theta. Partly get here. इसमें अगर हम पुट कर देंगे हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है a1 plus a2 cos phi, इसके प्लेस पे पुट कर देंगे. एक्चुअली a sin ओमेगा t हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a ले रहे हैं, तो मान लेते हैं इस पूरे एम्पलीट्यूड को अगर हम a cos थीटा ले लें और a2 cos phi cos ओमेगा t का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज टेकन एम्पलीट्यूड, सपोज इट इज a sin थीटा, सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ये हो जाता है. देन इफ यू विल पुट हियर देन व्हाट यू फाइंड हियर y is equal to resultant displacement here a1 plus a2 we put a cos theta sin omega t plus a2 cos phi a sin theta
A sin theta cos omega t. This is equal to A sin omega t cos theta plus sin x cos y plus cos omega t sin theta. Sin x cos y plus cos x sin y, it is equal to a sin omega t plus theta. This is why. Thus we find that the resultant displacement is y and the resultant amplitude it is a, and here the resultant phase difference it is equal to theta, and after superposition or we can say in interference the resultant wave is also the wave having the amplitude a and displacement y. So here y is equal to a sin omega t plus theta. Now we will calculate the amplitude. What we will do? Squaring and adding a1 plus a2 cos phi is equal to a cos theta and a2 cos phi is equal to a sin theta. Now a square here a square cos, इसको स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं, a cos theta a square cos square theta प्लस इसको a square sin square theta, it is equal to a cos theta का होल स्क्वायर जब करेंगे a1 plus a2 cos phi होल स्क्वायर प्लस a2 cos phi होल स्क्वायर. Here this implies that a square cos square theta plus sin square theta that is 1. तो हमारे पास होगा a1 plus a2 होल स्क्वायर, it is a1 square plus a2 square cos square phi plus 2 a1 a2 cos phi plus a2 square cos square phi, a2 square cos square phi. Here this implies that a square it is equal to a1 square a2 square cos square phi square cos square phi sin s cos omega t. यहाँ पे ये होगा a square cos square sin phi होगा a1 plus a2 is sin phi होगा, it is equal to sin phi. तो हो जाएगा a1 square a2 square a1 a2 sin square phi a2 sin square phi. a1 square a2 cos square phi a2 sin square phi. Here a2 t square take out common, it is cos square phi plus sin square phi plus 2a1 a2 cos phi. Here sin square phi plus cos square phi that is 1. So a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, it is a square. And here
A1 square plus A2 square 2A1 A2 cos phi. Since intensity is no doubt, since intensity of light, since intensity of light I is directly proportional to A square, implies that I is equal to K A square. अब हम I K A स्क्वायर दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई करते हैं, so therefore K A square is equal to K A1 square plus K A2 square plus 2K A1 A2 cos phi, and this implies that I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. This is the intensity at any instant. Intensity at any instant. This is intensity at any instant intensity at any instant. Here, this is intensity at any instant of light after interference. Now we will study the condition for constructive and destructive interference already, and here 2 root I1 I2 cos phi is known as the interference term. इसको हम कहते हैं इतने टर्म को इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस term. 2 root I1 I2 cos phi, it is known as the interference term. Now we will study condition for constructive and destructive interference. The intensity at any instant after the interference. Condition for constructive and destructive interference. Condition for constructive and destructive interference. Destructive interference. Constructive and destructive interference. Here, since intensity here we have I equal to I1 plus I2, 2 root I1 I2 cos phi. Intensity will be maximum, तो लिखेंगे condition for constructive interference, condition for constructive and destructive interference. First, for constructive interference,
इंटरफेरेंस। नहीं वीडियो बनाओ, नहीं तो फिर नहीं, सेकंड आप ले लीजिए क्योंकि थर्ड मेरा सब्स्टिट्यूशन भी लग गया। आप सेकंड कर लीजिए, मैं थर्ड आ जाऊंगा। ठीक ठीक है। ठीक। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I is maximum when cos phi it is equal to 1. I is maximum when cos phi is equal to 1. तो देख लेना, cos phi is 1, तो I will be maximum implies that phi is equal to cos phi किस पर maximum होता है, phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. And we know that the relation between the phase difference and the path difference, here phase difference phi is equal to 2 pi upon lambda into path difference. Therefore, path difference P is equal to lambda upon 2 pi into phi, and this implies that P is equal to, when phi is equal to 0, P is equal to 0. When phi is equal to 2 pi, it is lambda. And phase difference it is 4 pi, it is 2 lambda. And so on. 6 pi if you put, that will be equal to 3 lambda. This implies that P is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. It means if path difference is integral multiple of wavelength, if path difference is the integral multiple of wavelength, then path difference is integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength, then we find that constructive interference, we find the constructive interference. This is the condition of constructive interference. यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्लिट्स हैं, 2 स्लिट्स, एक सोर्स यहाँ पे है और एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस, यहाँ से जो लाइट अगर यहाँ पे जाएगी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी ऊपर, S2 और S1 के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। ये पाथ इक्वल, इसको हम पाथ डिफरेंस 0। अब हम क्या करें, अगर एक पॉइंट P पर मिलते हैं, सोर्स लाइट आ गई यहाँ से, किसका पाथ बड़ा होगा, ये पाथ बड़ा है इससे, तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। यही पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो मैक्सिमम लैम्डा है, तब भी मैक्सिमम 2 लैम्डा, तब भी मैक्सिमम एंड सो ऑन। मतलब ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो हमारा ब्राइट डार्क बनेगा। मतलब यहाँ पे ब्राइट बनती है फ्रिंजेस, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनती चली जाती है। इस सेंटर पे ब्राइट बनती है। क्यों ब्राइट बनती है? क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब कि सेम फेज में मिलेंगे, और जब दो लाइट सेम फेज में मिलती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे, और इसी अपोजिट फेज में मिलती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमारे पास
ये जो हमारा इंटेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। नाउ कंडीशन फॉर इट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकेंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। फॉर डिस्ट्रक्टिव for destructive interference. For destructive interference, you can see here we have destructive interference. Since intensity of light we have I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Intensity will be minimum when means I is minimum and cos phi it is -1. If cos phi is -1, therefore phi is equal to pi, 3 pi, 5 pi and so on. Here pi is equal to pi, 3 pi, 5 pi and so on. Phase difference, relation between the phase difference and the path difference is, what is relation between the phase difference and the path difference? पाथ डिफरेंस ये होगा तो लाइट मतलब इमेज। What is the relation formula? इसके पहले लिखवाए phi is equal to 2 pi upon lambda into p. ध्यान रखना, means we have phi is equal to 2 pi upon lambda into p. So what is the p? Lambda upon 2 pi into phi. This implies that p is equal to, हमारे पास ये p जो होगा p, अब हम phi की वैल्यू pi पुट करें, क्या हो गया? pi पुट करें, pi pi कैंसिल to lambda by 2. 3 pi पुट करें 3 lambda by 2. 5 पुट करें 5 lambda by 2 and so on. Therefore, we can write as here path difference it is equal to odd multiple of. This implies that for destructive interference, path difference should be the odd multiple of lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2. अगर दो लाइट वेव किसी पॉइंट P पर वेव लेंथ के हाफ के 8 मल्टीपल से मिलती है, मतलब अगर वेव उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो या 3 लैम्डा बाई 2 हो या 5 लैम्डा बाई 2 हो, तो जो वहाँ पे जाके वेव मिलती हैं वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मीन डार्क फ्रिंजेज बनेगी। और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज P इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 पर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। n वहाँ 0 से शुरू हो रहा था, यहाँ 1 से, क्योंकि 0 पर हमारा जो फ्रिंज बन रही है दैट इज द ब्राइट फ्रिंज। तो एक ही जगह ब्राइट और डार्क नहीं बन सकता, यानी इक्वल टू 0 पर अगर ब्राइट है तो डार्क यानी इक्वल टू 1 पे ही बनेगा। और इस तरह से हमारे पास कहने का मतलब अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे डार्क
फिर ब्राइट, फिर डार्क एंड सो ऑन। इस तरह से दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लिक्ड विड्थ। इसको साफ करके दूसरे वीडियो में डालेंगे।